एक तरफ पहाड़ टम्बलिंग डाउन टू द वाटर्स और दूसरे तरफ समंदर एज फार एज वन कैन सी, और इन दोनों के बीच अ सिटी वेयर आई कैन सी माई सेल्फ लिविंग द लेड बैक लाइफ। हेलो अन ट्रैवलर्स, मैं हूं अभिषेक, और अगर आज आप मेरी फेवरेट सिटी देखने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। Located on the mesmerizing Cape Peninsula, where the waters of Atlantic and Indian Oceans meet, is Cape Town, arguably the most beautiful city in the world. एक ऐसी जगह which has it all: unique beaches with seaside communities, captivating mountains visible from every corner, streets full of life and culture, and incredible countryside. Cape Town में एक चीज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, that is to run out of things to do. और यहाँ की ब्यूटी ऐसी है कि इवन द रेजिडेंट्स आर ऑलवेज इन ऑ ऑफ इट। एंड सिंस यहाँ की करेंसी 1 रैंड इक्वल्स टू 4.5 इंडियन रुपीज, तो अगर आप एक मीडियम बजट ट्रिप में एक होलसम वेकेशन एंजॉय करना चाहते हैं, देन केप टाउन इज अनडाउटेडली द प्लेस फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एब्सोल्युटली एक्सिलरेटिंग, केप टाउन एक इंस्पिरेशनल जगह भी है, मेड बाय एंड फॉर द पीपल हु स्ट्रगल्ड फॉर ईयर्स। फॉर अ रिमाइंडर ऑफ ऑपरेशन एंड हाउ फार साउथ अफ्रीका हैज कम, do go to the prison where Nelson Mandela, the man who inspired millions around the world, was imprisoned for 18 years. Also called the country's mother city, Cape Town is located in the southwest corner of South Africa. यहाँ पहुंचने का सबसे आसान वे is by air. Cape Town International Airport is well connected by domestic and international flights. और एयरपोर्ट से you can take an Uber to your accommodation. In fact, the entire city is well connected by Uber and it is a cost-effective option to get around to. साउथ अफ्रीका में वी डिड अ रोड ट्रिप फ्रॉम जोहानिसबर्ग टू केप टाउन, ड्राइविंग फॉर मोर देन 3000 किलोमीटर्स। मैं तो बोलूंगा कि अगर आपको अच्छे से केप टाउन और उसके सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना है, देन डू रेंट अ कार। एंड सिंस लाइक इंडिया, इवन दे हैव लेफ्ट हैंड ड्राइव, दिस मेक्स इट रियल इजी टू गेट अराउंड। केप टाउन आकर इफ यू डोंट सोक इन द स्पेल बाइंडिंग एरियल व्यूज, देन आपकी ट्रिप अधूरी है। इसके लिए या तो यू कैन टेक अ हाइक और अ केबल कार अप टू द आइकॉनिक टेबल माउंटेन, or hike up the Lion's Head, and that too just before sunset for the experience of a lifetime. And to be truly blown away, take a helicopter ride into the bright blue sky to enjoy the aerial views of the entire Cape Peninsula. वैसे तो the most popular things to do here include visiting the Cape of Good Hope and Cape Point. Although ये जगहें आपको काफी crowded मिल सकती हैं, but फिर भी वहाँ जाना can be worth it for the pictures alone. And just 1 hour south of Cape Town is the iconic Boulders Beach, जहाँ you can watch the endangered and super adorable penguins. Watching them from such close quarters is both a unique and a fun experience too. When it comes to beaches, Cape Town's rugged coastline is studded with some of the most picture-perfect beaches in the world. But the unusual thing here is that most of the beaches have cold waters, so much so that I couldn't even take a dip. ये तो बाद में पता चला that the Atlantic coast beaches have water that is quite cold, while the beaches along the False Bay coastline boast warm water. The only one that I could cover was the most touristy beach called Camps Bay. Overpriced food and drinks aside, Camps Bay beach is worth visiting for the views of Lion's Head and the 12 Apostles alone. But if you want to avoid the crowd, visit the beaches on the False Bay side. Not only are they relatively more laid back, but are also good for surfing and has warm and shallow waters. जैसा कि मैंने कहा था, Cape Town has it all. तो अगर beaches और mountain से मन भर जाए, then there is incredible countryside waiting for you. Wine तो delicious है ही, but the drive to vineyards through the mesmerizing countryside is the real treat. There are around 18 wine routes with vineyards centered around historic villages. So book a wine tour and treat yourself with a tasting experience. बट एक सिंपल डे ट्रिप से बेटर है इफ यू कैन प्लान योर स्टे इन वन ऑफ द मेनी बुटीक एक्सपीरियंशियल स्टेज ऑफर्ड बाय विनयार्ड्स। वी विजिटेड द जॉर्डन वाइन एस्टेट इन स्टेलेनबॉश, और यहाँ के हिल साइड विनयार्ड्स और स्वीपिंग व्यूज मेड अस फील दैट वी डिडंट हैव इनफ टाइम टू ट्रूली सोक इन द ग्रैंडर ऑफ द प्लेस। ऑनेस्टली बोलूं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट द ग्लोरी ऑफ केप टाउन, बट ऑल दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, और केप टाउन में मैं आपको जितनी भी चीजें करने के लिए बताऊं वो कम ही होंगी।
From accommodation perspective, people generally stay in Clifton, Camps Bay and the waterfront areas. But we booked an apartment slightly on the outskirts in a place called Blueberg Strand. थोड़ा out of the way लगेगा शायद, but if you can see the Table Mountain right from your living room, then who can blame us? एक क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के दिमाग में होता है, Is Cape Town safe? The short answer is yes. बस केयरफुल रहना है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. Don't wander around in dark. Don't go hiking all by yourself. Always take an Uber after a late night party. And don't flaunt valuables or keep expensive items visible while parking a car. So basically, be alert and keep your guard up. अब हो सकता है आप सोच रहे होगे कि अफ्रीका है तो बहुत गर्मी होगी. But Cape Town is almost never too hot. Even in the peak summers, which by the way is from December to February. But in summers, be a bit conscious about your water usage because the city faces a severe water crisis at times. The best months to visit could be during March to May or from September to November when the weather is good, crowds are less and prices are lower. In case you are visiting between December to Feb, make sure आप accommodation काफी एडवांस में बुक कर लेना because that is the peak season and Cape Town sees a lot of tourists during that time. Most of the people who know me are aware that I'm not really a city person. But if there's one city that can be an exception, it has to be Cape Town. After its first democratic election, South Africa started being known as the Rainbow Nation. And at the end of this rainbow, the pot of gold is Cape Town. Overwhelmingly natural, wildly picturesque and colorfully cultural. बस और क्या चाहिए? अभी के लिए बस इतना ही. अगले हफ्ते फिर मिलता हूँ ऐसी ही कुछ डाइवर्स, मेस्मराइजिंग और रेडियंट जगहों के साथ. तब तक के लिए बी काइंड, बी थैंकफुल एंड बी हैप्पी.